तो भाई चलिए नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 2.29। ये है भाई हमारा एग्जाम सम। कब आया था, थोड़ा पुराना है, 12 मार्च नवंबर 2003, थोड़ा क्या बहुत पुराना है। तो करते हैं ये सम। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड एज एट 31st March 2003 was as under: equity share capital 80, preference share capital 40, debenture 64 lakhs, and reserves finally 32 lakhs. Sun Limited earns a profit of rupees 32 lakhs annually on an average before deduction of income tax, which works out to be 35% and interest on debentures. भाई कवि क्या कहना चाहता है? दिस लाइन हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग एंड वील कम टू दैट। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड, यानी कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%, यानी ये है हमारा केई इंडस्ट्री एवरेज। काफी अलग सम है ये, बहुत मजेदार। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड, यानी हमारे इंडस्ट्री में राइवल फर्म्स का एवरेज क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड, यानी 9.6% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द डिस्काउंटिंग रेट बेसिकली दे आर यूजिंग फॉर द पर्पस ऑन एन एवरेज, उतना आ रहा है हमारे राइवल फर्म्स का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोवाइडेड, ये जो है ये बहुत बढ़िया है। 9.6% प्रोवाइडेड, कंडीशंस है। प्रोवाइडेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड एटलीस्ट 3 times. Capital gearing ratio is 0.75. Yield on share is calculated at 50% of profits distributed and at 5% on undistributed profits. तो ये कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन एंड ओनली देन दिस 9.6% KE will work. Otherwise the KE will change. Sun Limited has been regularly paying equity dividend of 8%. Compute the value per equity share of the company. Amazing sum. चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही प्यारा सम। It'll be a little bit time taking. You have to be very patient because this sum has lot of layers. Let's begin. तो पहली बात, इन्होंने सम की शुरुआत करूंगा मैं एक assumption और एक नोट से। First things first that actually catches my eye is 31st March 2003 तक का डेटा है। दिस इज अ कंपोजिट डेटा टिल 31st March 2003. Sun Limited earns a profit of 32 lakhs annually on an average before deduction, on an average before deduction of income tax. So what does this mean? So already the year has ended and ये average का मतलब क्या है तब? So they would have told that this year's profit and all that. No, they have not used that language. They've used the language annually on an average before deduction of income tax, which works out to be 35% interest on debentures. Yani earnings before interest and tax, basically from our past experience on an average का मतलब क्या है? Our past experience. On the basis of our past experience on an average, मानो last 3 years 5 years का average लिया होगा, उसका 32 lakhs on an aggregate we earn, and that is what is supposed to be our projection for future. वैसे करके भी ले सकते हैं इसको. So it is nothing but a kind of a statistical mean that they have tried to create is 32 lakhs. Done. ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? Why I am inferring it so very literally? I'll tell you as I go ahead. चलो एक काम करते हैं, I'll take the note a little later just to build it up, build up the fun. Now obviously we have to
मैच प्रोवाइडेड यहाँ लिखा हुआ है, वी हैव टू मैच आवर सेल्स विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड कि भाई ये 3 टाइम्स हो, ये 0.75, सो वी हैव टू मेक एन इनकम स्टेटमेंट. We can extract the data properly and then work on it. So now we go on to building an income statement very quickly. So drawing the income statement, चलिए शुरू करते हैं. आप भी ड्रॉ कीजिए मेरे साथ जल्दी जल्दी. Now let us begin filling up this. तो ऑन एन एवरेज क्या लिखा था उन्होंने? प्रॉफिट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT कितना था? उन्होंने बोला 32 lakhs ऑन एन एवरेज. सर एवरेज वर्ड पे इतना क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं? 2 मिनट. राइट नाउ 32 lakhs. उसके बाद इंटरेस्ट हम लोग ले लेंगे. इंटरेस्ट ऑन क्या लिखा हुआ है यहाँ? 8%, सॉरी 12% डिवेंचर्स है यहाँ. इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर कितना मालिक? डिवेंचर 64 into 0.12, so we have 7,68,000 as our interest component. राइट तो कितना बच गया इसके बाद? -32 lakh. वी हैव 24,32,000. वी हैव 24,32,000. दिस इज व्हाट? EBT. इसमें से क्या आ जाएगा भाई? टैक्स कितना? एट द रेट 35%. That's 8,51,500. That's 8,51,500. Sorry 200. 851,200 आ गया हमारा टैक्स कंपोनेंट. तो भाई 851,200 हमारा टैक्स कंपोनेंट आ गया. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना रहेगा? आया हमारा कितना? 15,80,800. तो हमारा EAT फिगर जो है वो आ गया 15,80,800. राइट तो EAT ये हमारा फिगर आ गया. इसके बाद अब क्या क्या डिडक्ट होगा भाई? 2 तरह के डिविडेंड डिडक्ट होंगे. क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इक्विटी डिविडेंड. यहां लिख देते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर. कितना है भाई उनका? 8% के हिसाब से. पेडअप वैल्यू चेक कर लो भाई कितना है? 40 lakhs. तो 4 8 32 यानी 3,20,000 इज आर प्रेफरेंस डिविडेंड दैट इज पेड. राइट इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर के लिए पैसा बच जाता है. कितना बचता है मालिक? 12,60,800. सो 12,60,800. और यहां दूसरा डिविडेंड आएगा अपना. किसका? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 8% के हिसाब से. टोटल भाई बेस कितना है? 80 लाख. तो 80 लाख का 8% कितना आएगा? 6,40,000 -640.
कितना आया 620,800। तो 620,800 क्या हो गया हमारा 620,800। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस था हमारे पास आफ्टर मेकिंग अ फिक्स्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर 12,60,800 और उसमें से हमने डिविडेंड वालों को 640 दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है सन लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%। तो अज्यूमिंग दैट वी कंटिन्यू टू डू दैट एज वी हैव केप्ट डूइंग, तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो 620,800 इज आर रिटेन्ड अर्निंग। तो ये बन गया मेरा इनकम स्टेटमेंट। अब देखो मैं इतने इस बात पे स्ट्रेस क्यों दे रहा था इतना कि हम लोग अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें मैं स्ट्रेस दे रहा था किस बात का, कि भाई ये पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। सेकेंड थिंग आई टोल्ड दैट दिस इज 31st March 2003, ऑल द डेटा इज गिवन एज ऑफ द ईयर एंड। Now whenever we are calculating in any of the formulas, in case if we require, just as a matter of thought, in case if we require शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा मेरा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में मैं रिमाइंड करा रहा हूं आपको, मेरा क्या आ जाएगा 80 लाख रुपीज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ 32 लाख। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर का फंड है, एम आई राइट। तो ये दोनों मिला के कितना आएगा 112 लाख। शाबाश। यू वुड बी सेइंग सर रिटेन्ड अर्निंग्स वी शुड बी ऐड। दो बातें, पार्ट 1 it is first 31st March 2003, so if any retained earnings would be there it would have been already forming a part of my reserves। ठीक है, मैंने ट्रांसफर कर दिया होगा उसको रिजर्व में, सत्य वचन, पहली बात। दूसरी बात, a more alarming thing, 32 lakhs annually on an average। So if I take these lines, it gives me a clear indication that this 32 lakh is just given as a ballpark figure for the purpose of computation based on our past experiences, and ये रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई काम नहीं है हमारे फर्दर कंप्यूटेशन में, बिकॉज let us assume it is for 2002-03, such retained earnings would already form a part of my reserves। तो उसीलिए annually on an average दिया, it's like a second indicator which states that this is aggregates what we have found for the purpose of our computation, and this should not form a part, the retained earnings should not form a part of our further computation of equity shareholders fund। Reason being, on 31st March 2003 we have already closed everything and we have figured out that reserve is 32 lakh. Obviously it would be inclusive of 2002-03 retained earnings, so that assumption sounds very very logical। ठीक है, तो ये दो बातों को अगर मैं मिक्स कर दूं, so it gives me a clear cut indication that 620,800 needn't form a part of our computation of equity shareholders funds, assuming that has been included in reserves। तो यहां हम लोग एक assumption लिखेंगे, the sum clearly states that the profit of rupees 32 lakh is an average profit। देखो यहां क्या लिखा है भाई, लिखा नहीं लिखा है, राइट, इज एन एवरेज प्रॉफिट, average profit, right? The sum clearly states that the profit of rupees 32 lakh is an average profit। In other words, it is based on past
experience of the organization and it can be used for the purpose of ratio analysis as required in the sum. पहली बात आगे लिखवाता हूं. Moreover, the retained earnings so arrived in the income statement would not be added to the shareholders fund, more precisely equity shareholders fund, as we assume the same is accounted for in the reserves of the year just ended. That is 31st March 2003. वही है ना भाई, देख लो डेट. करेक्ट. तो ये आपको बचाएगी कोई मिस्टेक करने से. ये नोट, आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग नोट, बट इट एंश्योर्स दैट यू डू नॉट गेट swayed away by different arguments that's boiling in your brain. This is the reasoning behind how we'll treat things. Right. Moving further, the cost of capital on an average followed by the industry is 9.6% subject to conditions so provided. मजा आ रहा है ना, एकदम थ्रिल वाला समय भाई. चलो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन सो प्रोवाइडेड, जो हमने आगे डिस्कशन में बताया था कि कंडीशनल है ये. आगे बढ़ते हैं कि भाई कंडीशंस क्या है. द कंडीशंस दैट वी नीड टू सेटिस्फाई इन ऑर्डर टू हैव अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 9.6% फॉर द पर्पस ऑफ आवर कंप्यूटेशन. द कंडीशन इज फर्स्ट वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट and fixed dividend at least 3 times. So technically this is nothing but ICR, interest coverage ratio. यहां हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन पहला आएगा मेरा कंप्यूटेशन ऑफ ICR, राइट. Interest coverage ratio. What do you mean by interest coverage ratio? It just shows how many number of times your profit is able to cover your interest payout. The higher the better, right?
So it, in short, it shows the solvency of the firm. So it's a good indicator, but you cannot see ratio analysis. Personally speaking, I've learned, I've taught, but I've never been very interested with the ratio analysis thing because it's pretty gray. Nothing is very conclusive until unless you mix 3-4 ratios. Each ratio has different variants. For example, ICR also has a variant. There are basically 3 variants of ICR. Let me just put it over here. Just as a matter of note, I'll put it in blue. First variant is earnings before interest, depreciation, amortization and tax, right? That is taken in the first variant as your numerator. Basically this number would be pretty large because you have not accounted for interest, depreciation, amortization, tax, कुछ भी account नहीं किया. Obviously the ICR, if you calculate by this mechanism, is going to give you a wonderful number. It will be, the number would be very large. So this will be the numerator, right? So fixed payments would be the denominator. Second, अगर मैं ICR लूँ variant, तो it's EBIT by fixed payment. EBIT में भाई क्या हो जाएगा second variant में? If you notice EBIT, earnings before interest and tax, so technically depreciation, amortization accounted for. Obviously this would give you a little conservative number, nothing to worry. Third one, this is the most conservative. Earnings before interest and after tax, EBIAT, यानी टैक्स वैक्स सब अकाउंट कर लो, इंटरेस्ट को टेक्निकली ऐड बैक कर देना है, एंड वी हैव ओनली एडेड इंटरेस्ट बैक. बाकी सब कुछ डिडक्ट हो जाएगा, डेप्री, एमोर्टाइजेशन, टैक्स, सब कुछ. इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर दो, टैक्स भी डिडक्ट कर दो, ऐड बैक इंटरेस्ट, राइट? सो दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव, गिविंग यू द लीस्ट नंबर. एंड प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू जज एन ऑर्गेनाइजेशन, this is the best way if you ask me. The reason being because it will give you a very clear-cut judgment, no ifs and buts, right? So this will give you a very clear-cut argument as to how much profit or earnings you are making in order to cover your fixed payments. ये है 3 ICR के वेरिएंट. सर सम में हम लोग कौन सा वेरिएंट यूज करेंगे? So basically this is the variant which we are going to use in the sum. Variant number 3, the more conservative variant. सत्यवचन, चलिए आगे बढ़ते हुए. I just thought I'll give you an extra idea as to how ICR looks. Now going into the sum further, if you notice over here, so for the purpose of ICR, what do I need? I need earnings after tax, and I need to add back my interest component on the same. What does it basically give me? That is earnings before interest and after tax. So I'll take these two numbers and just add it. 1580,800 and 1580,800 plus 768. So I get 2348,800. कंप्यूटेशन ऑफ ICR फॉर आर पर्पस क्या आएगा भाई? 2348,800. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? फिक्स्ड पेमेंट्स आएंगे मेरे. डिनोमिनेटर में आएगा फिक्स्ड पेमेंट्स. फिक्स्ड पेमेंट अगर हम चेक करें क्या है, 2 फिक्स्ड पेमेंट कर रहे हैं अगर आप देखो तो. Though it is dividend, but it's a fixed payment. 320 and interest 768, that is 1088.
1088. So what is my answer for this? Divide by 1088. So I get 2.158823 something. We'll just write it as 2.16 times. ICR के लिए आपको और एक भी बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, हायर द बेटर, जो मैंने शायद बोला था 100% बोला था. It's always higher the better. Generally, on a ballpark as a thumb rule, ICR is always generally a large number. See, all the ratios are not having the same kind of base, right? अब देखो अलग अलग रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियोज आर जनरली वेरी वेरी स्मॉल, राइट? तो वैसे हर रेशियो का है, जैसे कि एसेट टर्नओवर रेशियो वो जनरली बहुत लार्ज होता है. तो हर चीज का रेशियो का जिसको होता है ना बॉल पार्क आर जनरली डिफरेंट. तो ICRs आर जनरली ऑन द हायर एंड. नाउ कमिंग टू दिस, सो होपफुली दिस इज absolutely clear. We've used this earnings before interest after tax divided by my fixed payment, so it's 2.16 times. What is the industry average, my dear friend? The industry average is 3 times coverage. तो अगर हम देखें हमारा ICR काफी कम है इंडस्ट्री एवरेज से, less than the industry average of 3, correct? तो 3 टाइम्स है इंडस्ट्री एवरेज, हमारा ICR है 2.16. हायर द बेटर होता है, लोअर द बेटर नहीं होता है. सो लोअर द वर्स. So technically this is a negative point for us to keep in mind. यहां लिख लेंगे ये नेगेटिव है हमारे लिए. Right? Moving further from ICR, if I go a little ahead, second क्या है? कैपिटल गियरिंग रेशियो. कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो भाई कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है? इट शोज व्हाट? राइट, एक्सटर्नल फंडिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. तो टेक्निकली या हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी एक्सटर्नल में ही ले लेंगे. तो इसको लिखते कैसे भाई? कैपिटल गियरिंग रेशियो. कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.75. अच्छा, यहां हायर द बेटर होगा लोअर द बेटर होगा? सीधी सीधी बात है, लोअर द बेटर. वो पहले लिखवा देता हूं नहीं तो भूल जाऊंगा. रीजन क्या है? जितना एक्सटर्नल फंडिंग इज लेस, इट इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इजंट इट? बिकॉज द मोर यू हैव, यू कैन से fixed commitments on your head, that can actually put a lot of pressure on the finances of an entity. Am I right? चलिए तो आगे बढ़ते हैं CGR के साथ, कैपिटल गियरिंग रेशियो के साथ. फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, this is to be divided by equity shareholders fund. Now have you understood as to why I spent so much time explaining that retained earnings are not to be clubbed? I already told you the reasoning behind it. It's already glued into our reserves, so we needn't be bothered. It's clubbed along with it.
राइट तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना आया 80 प्लस 32 112 एंड बाई फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने लिए हैं वो क्या है 40 प्लस 64 सो बेसिकली 104 सो वी हैव 104 बाई 112 तो हमारा CGR कितना आ गया कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 104 बाई 112 कितना आया मालिक 0.928 कुछ आया तो हम लोग उसको लिखेंगे 0.93 टाइम्स द कैपिटल गियरिंग रेशियो ऑफ द फर्म is higher than the industry average. Satyavachan is higher than the industry average of 0.75 times. ये भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है अपने लिए दिस इज अ नेगेटिव फॉर अस राइट बेसिकली द रेशियो विच शुड हैव बीन लोअर इज हायर द वन विच शुड हैव बीन हायर इज लोअर राइट सो देयर आर टू नेगेटिव्स वेरी वेरी एविडेंट नाउ this is an assumption note that I need to give for the purpose of exam. Assumption and a note. Now, the industry average of COC is 9.6%. Satyavachan. But as the organization is not in conformity with the stated ratios we need to make necessary changes to the COC or the discounting rate. सत्यवचन राइट बिकॉज प्रोवाइडेड लिखा था ऐसा तो कुछ हुआ नहीं वी आर नॉट एबल टू कंफर्म टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सो वी नीड टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो यहां मैं अजम्पशन के पार्ट पे आ जाता हूं ये नोट हो गया नोट का अजम्पशन है ये 1% for every one time change in ICR interest coverage ratio. Now देखो ICR जनरली मैंने बताया था जैसे मैं आपको बोलता हूं डेट इक्विटी रेशियो है राइट तो उसका स्केलिंग अलग होता है ICR जरा उससे ज्यादा बड़ा रेशियो होता है बाद में आप लेवरेज रेशियोज देखिए अलग अलग एसेट टेस्ट रेशियो देखिए जनरली छोटा होता है राइट एसेट टर्नओवर रेशियो जनरली इट्स बॉल पार्क दे आर ऑन अ लार्जर साइड दे आर नॉट 0.2 1.1 like that right but as you see asset test ratios they are hovering around in and around 1 debt equity ratios are generally hovering around 2 3 like that
So every ratio has a different kind of base figure. So when we are have to scale for the changes, अब ये बहुत important point है, यहाँ ध्यान दीजिएगा. Sir, can we have our own assumption that you can make after you understand mine? Right? First you have to understand how I am going about it. What have I done? See, ICR is generally a ratio which is comparatively having larger figures than capital gearing ratio on a ballpark, on an aggregate, on an average understanding. So over here, what do we notice? That we should be 3 times but are 2.16 times. Basically, we are falling short by 0.84 times. So how many times we fall short? For every 1 time, I will adjust 1%. How will I adjust? See, it has a negative impact. Technically 3 उसके ऊपर होता है. If we would have been above 3, then it would have a positive impact. But the current scenario shows it is 2.16, 0.84 times. Is that the impact? We are on the worse side of things, not on the better side of things. So basically, for every 1 time change in the ICR, I'll make 1% adjustment, negative or positive. So अगर आप चेक करो, 0.84 is the difference between our ICR and the industry average. So I'll make 1% change for every 1% for every 1 time change. So basically my number of times change is how much? 0.84 times into 1. Can I write this? So how much change will I make? 0.84% change. ये पहली बात हो गई. अब आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस की तरफ. Is it having a better impact or worser impact? The worser impact. Reason is because we are lower than the industry average. So now, should we add 0.84 or deduct 0.84 to 9.6? We should technically add. This number has to be added. Reason being, higher the discounting rate, lower the value. In other words, higher discounting rates denote an organization with higher risk. Lower ICR means higher risk. Right? I'm just trying to tally it. Now see the sequence. Lower ICR will obviously push the discounting rate higher, which obviously higher discounting rate is nothing but higher risk. So basically it's moving in sync. So we need to add this. Sir, can I take, instead of this 1%, can I take 0.5%? Can I take 0.75%? Sir, can I take 1.5%? You're free to do. Right? Sir, will the institute allow? Yes. There's no problem that they are facing on that front. That's why it's assumption. Right? This is the assumption that we have taken. So 1% for every 1 time change. So for 0.84 time change, we'll adjust 0.84. We'll add it to our discounting rate. A higher discounting rate denotes a greater risk, which is also denoted by a lower ICR. So we'll make that change now. Second है हमारा CGR, capital gearing ratio, which is generally a little more timid than the ICR ratios. So in order to give it a better representation, can I take 2% for every 1 time change? This is the major point of discussion. This assumption part. So I'm discussing it in mighty detail. Sir, why have you taken 2%? A lot of people take 1% for each ratio. Let me tell you, taking 1% for any kind of ratio, is it justified? अच्छा मानो एक एग्जांपल देता हूं ATR रेशियो का, एसिड टेस्ट रेशियो. राइट, मानो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 1, हमारा है 0.97, 0.9. राइट, सो रिप्रेजेंटेशन कितना होगा? When you are toggling, based on that, you are changing the discounting rate. So what kind of representation it will take to the discounting rate? If you say 1% for every 1 time change, change क्या है भाई? 0.1, 0.03. So ultimately the discounting rate will change by a trivial number. On the other hand, if you give
asset turnover ratio a good exposure, or certain leverage ratios a good exposure, right? So obviously they would change the rate by a mile, and this wouldn't be changing the rate by our ATR, wouldn't be changing the rate by a centimeter also, our acid test ratio, right? So in order to give a good representation, we are changing the weights. So basically this 1% and 2% are weights that are assumed by me. You can assume anything, but I always recommend for ratios which are generally lower numbers, a higher representation is recommended. Ratios with higher numbers, generally a lower representation or weightage is recommended. ठीक है, तो यहां हमारा कितना आ रहा है भाई, 2% फॉर एवरी 1 टाइम. तो हमारे यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है बाल को, यहां देख लेते हैं जल्दी जल्दी. कहां गया भाई रेशियो, चलो यार आप. So 0.93 against an industry standard of 0.75, right? So the difference is how much? 0.18. कितने times change आया as against the industry standard? 0.18 times. That's why I gave it a higher weightage, because generally the ratio itself by its very nature, जैसे मैंने एसिड टेस्ट रेशियो का एग्जांपल दिया था, बाय इट्स वेरी नेचर द रेशियो इज अ टिमिड एंड लो नंबर. सो ओवर हियर वी विल पुट इट एज 0.36% चेंज. नाउ डायरेक्शन ऑफ चेंज, इसमें क्या है, हायर द बेटर लोअर द बेटर. सीजीआर का सीधा हिसाब है लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, बिकॉज लेसर एक्सटर्नल पार्टीज वुड बी लेसर स्ट्रेस फॉर अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन. बट नहीं, यहां भी हम लोग एग्जाम फेल हो गए. कैसे? क्योंकि हमारा सीजीआर देखो 0.75 के ऊपर 8.93. सो ओवर हियर इट इज लीविंग अ नेगेटिव इंपैक्ट. नेगेटिव इंपैक्ट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंटिंग रेट hence said, राइट? इसको बोलते हैं लेजिटिमेट एक्सप्लेनेशन. नाउ आ जाते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट. अब सोच रहे हो सर और कितने अजम्पशन है? एक है बस, बहुत इजी वाला है, डोंट वरी. नाउ एडजस्टमेंट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट, इंडस्ट्री एवरेज, इसका हेडिंग लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स एंड परसेंटेज. 9.6. यहां कितना आया था भाई आईसीआर के लिए? एडजस्टमेंट फॉर आईसीआर, क्या भाई? लोअर आईसीआर था हमारा, तो उसके लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेटिंग द रिस्क एलिमेंट बाय इंक्रीजिंग द डिस्काउंटिंग रेट. एडजस्टमेंट फॉर सीजीआर, यहाँ लोअर होना चाहिए था लेकिन आ गया हायर, तो वी विल एडजस्ट इट फॉर the negative impact. So 0.36 gets added. So we have by 9.6 plus 0.84 plus 0.36, 10.8. So we have 10.8. So obviously we are going to rank this firm with a higher discounting rate. See, when you take a higher discounting rate, a higher KE, the present value of cash flows would be lesser. That means the intrinsic value would be lesser. That is what I'm trying to explain since a while. Chaliye. Now we come to practically the last part of the tale. What is the third point? In case if you remember, the third point of the discussion was yield on share is calculated on 50% of distributed and 5% on undistributed profit. So my distributed profit is this. प्रेफरेंस शेयर को जो है कंपल्जन में आता है ये डिस्ट्रीब्यूट, ये उसीलिए मैंने अलग किया था. डिस्ट्रीब्यूटेबल आ गया 1260 800, डिस्ट्रीब्यूटेड 640, इसका 50% लेंगे.
एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड का 5%, 620, 800 का 5% लेंगे. Computation of yield as per the industry norms. कितना आएगा भाई? तो कितना आएगा भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड कितना था हमारा? 640. इसका कितना लेंगे? 50%. It is 3,20,000 and 5% of undistributed profit. इसमें भी आपको डाउट आ सकता है, which I'll take up. We had 620, 800 into 0.05, which is 620, 800 into 0.05. We have 31,040. 31,040. So what's my total over here? My total is 3,51,040 on equity base. So my yield would come to how much? Actual yield. Actual yield would come to 351,040 divided by the equity paid up equity share capital कितना है? 80 lakhs. राइट, तो कितना आ गया मेरा एक्चुअल यील्ड शेयर होल्डर के लिए? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना आया? 0.04388 और से 4.388%. कैन आई राइट? तो ये मेरा एक्चुअल यील्ड आ गया. डन. तो भाई यील्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ रहा है? 4.388%. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अगर आप देखो सम में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है हमारा 80 lakhs, राइट, but the paid up value is not given, so we have to assume the last thing that I told, that you have to assume. So let the paid up value be, अब 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, ठीक है, चलो 100 रख लेते हैं. सो शेयर होल्डर का रिटर्न क्या है? yield to the shareholder is how much on basis of paid up value, परसेंटेज पे नहीं, एब्सोल्यूट टर्म्स में. सो yield कितना आएगा? 100 into 0.04388. सो इन रुपी टर्म्स कितना आएगा? रुपीज 4.388. राइट, दिस इज द yield to the shareholder. What is the present value of the cash flow? Or I can consolidate and tell what is the intrinsic value of the firm, value of the security. वही पूछा था ना भाई, value of the security. So what do I get over here as my intrinsic value? 4.388 डिवाइड बाय, हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? 1/KE मैकेनिज्म यूज करेंगे. यस, मैंने आपको पहले भी सिखाया था. डिविजन बाय KE converts all the uniform cash flow from T1 to T infinity to present value, which is nothing but the present value of a uniform cash stream, which is nothing but the intrinsic value, the equilibrium price, right, or the so-called value of the security which has been asked in the question. So agar my yield is 4 rupee
4.4 rupee roughly, that's 4.388. If I discount it at 10.8%, which is nothing but the adjusted discounting rate which we got, which is higher than our rival firms. Why? Because we are more risky. Why we are more risky? Because our ratios are not matching with the standard ratios of the industry. So 4.388, we bring all this stream of 4.388 to present value, dividing it by 0.108. What do I get? 40.63. What do I get? 40.63 rupees. 40.63 is the number that I am getting, which is nothing but the value of the share. Finally, we have arrived. अब यहाँ कुछ बातें देखने लायक है. जैसे आपका contention क्या रहेगा? Sir, why we are taking 50% of distributed and 5% of undistributed? That's an industry standard, my dear. Provided में लिखा था ना point C. So if obviously the standard would be different, our answer would have been much different if they would have allowed for say 80% of distributed and 75% of undistributed. We would have been much better off than what we are now. Our price or security value is much lesser than our par value also. We can say the paid up value is 100 and our value as per the mathematics so applied is 40.63, which is much less. The reason being few things. One, our interest coverage ratio, if you notice, is worse off, right? अगर यहाँ देखो ICR is 2.16. दूसरी बात, हमारा CGR जो है capital gearing ratio is greater than the industry standard, which is another fallacy in managing our finances, right? So obviously that all led to a higher interest rate over here, right? That adjustment assumption वो आपको लेना है. Sir, can I take a different percentage? Yes, you can, very much. Sir, can I assume a different paid up value than 100 rupees? Can I assume 1000? Can I assume 10? Yes, very much. You're allowed to do that. It's not a problem area. The entire concept over here is seeing all these negative changes vis-a-vis the industry standard, our firm doesn't hold good. That is the reason why our share value is lesser than its paid up value, right? So that is what the entire computation was for. As the yield is much less and the discounting rate greater, we get the value of our security lesser than the paid up value of the share, right? सर अगर हमारे रेशियोज बेटर होते ऑब्वियसली देयर वुड बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय द डिक्रीज इन द रेट. ऑब्वियसली रेट डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा, द फाइनल वैल्यू वुड हैव शॉट अप. सो दिस इज अ क्लासिक सम व्हिच टेक्स यू थ्रू everything: income statement computation, ratio analysis, and finally into security valuation, right? Things that are to be kept in mind, I've already told it a number of times, that the assumption that you have to keep in mind कि भाई पहली बात ये 32 lakhs हमारा एवरेज प्रॉफिट है. रिटेन अर्निंग्स shouldn't be added to the reserves when we are doing this ratio analysis. I told you how each of these ratios work. We took the third ICR ratio, which is one of the most stringent standards of measurement. Then we took assumptions for how much percent for one time change, that you can take it accordingly and make necessary changes. Figure out in which direction it's going, whether it's negative or positive, right? If it's negative, you have to add it to the interest. If it's positive, you have to deduct. But generally you won't get it in sums, as I've noticed. So यहाँ हमने क्या देखा था कि यहाँ negative impact of ratios हमने देखा था. Obviously we added to the percentage. Then we finally computed the actual yield and figured out
on the basis of a paid up value that we assumed, we figured out the final value of security. As per me, there's some very less chances of coming in exam. I know you will curse me because I told it at the end, which I generally do. So this would, according to me, be a 2-star sum. It's a 2-star sum, so I'll write it at the top. It's a 2-star sum according to me, so very less chance of it coming in exam, right? So ये सम हो गया. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ. बहुत बढ़िया, कष्टलेस.